बेसिक हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी होता है चीज कि एट फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस. देयर इज अ कॉस्ट प्राइस which we denote as CP, right? Yes, sir. So there is some cost price. Above cost price, if something is marked, then that is called as marked price, right? Or we generally denote it by MP. Now over the mass marked price, we allow some discount, right? So discount is always given on mark price, whatever with a discount, whether it is in the value or in percentage. After discount, the item is sold, and that is called the selling price, right? Which we denote as SP. After selling, we compare the selling price with cost price, and if selling price SP is greater than cost price, we have profit, and that profit is basically the difference between selling price and cost price. So selling price minus cost price, that is the profit. And if you have to calculate profit percent, so the profit percent, as we know that the base is cost price on which the item or any article is purchased, so profit percentage will be the profit that we compare with respect to the cost price, CP, into 100, right? Suppose if the selling price is less than the cost price, if our selling price is less than the cost price, then in that case there will be a loss, and that loss will be again the difference between the selling price and cost price, but this time we'll write cost price minus selling price because we know that the cost price is more. Again, for the loss percentage, we use loss, and also we calculate the loss percentage with respect to the cost price on which the article bought, that is into 100. So this is the basic formula to calculate the profit percent, loss percent. And if something is marked, so we know that marked price is, let us say, X percent above cost price. And if there is a discount, so let us say if I denote discount as D percent in a percent value, so D percent of mark price. So keep in mind that mark price is always calculated on discount is always calculated on mark price. The mark price is always given with respect to the cost price, that how much percentage it is more with respect to cost price. And selling price, we compare selling price and cost price, and we got whether it is a profit or loss, right? Yes, sir. Now one more thing here, that if cost price is given, suppose for an example, we are taking example, as you know that 150 is the cost price. If I say that there is a profit, so what we do, there is a profit of 10% if I say, and I have to calculate selling price. We know that the selling price is nothing but the cost price plus profit, right? Yes, sir. And cost price we know, which is 150, plus profit we know this is 10% of cost price, which is 150. So either we can write 150 plus 10% of 150 is 15, that is 165. Or in other words, you can write like this also, that selling price is equals to cost price plus profit percent, whatever be the profit, so profit percent of cost price. Now see, if you take profit cost price as common, you will get into 1 plus p percent, right? If the profit percent is p, then you get cost price into p percent. Now if there is a loss, if there is a loss, so according to this we can say that loss, this is, that means what, this is less than the cost price, so this is 1 minus
loss percent. Like here, we know that the if profit is 10%, if profit equal to 10%, what we can say that the selling price is cost price into 10%, so this become 1.10, right? Yes, sir. Yeah. Now, if this is a loss, suppose if this is a loss, if loss is given, that loss is 10%. So in that case, selling price will be cost price into, as because loss is 10%, so 1 minus 10%, which is 0.1. So what we will get here is 0.90. 9. Yes. Or you can say that 100 plus 10% is 110. For the percent we divided by 100, we got 1.10. And for loss, this is 10% minus, so this is 90%. And again, we divided by 100 and we got 0.90, right? So this is the thing that you can directly write to calculate cost price, whether it is profit or loss is given. Clear? Yes, sir. And for the reverse process, that means what? If selling price is given, let us say if selling price is given, and if I say that the selling price, the taking value from the previous example, that if the selling price is 165 and there is a profit of 10%, and we have to calculate the cost price, what will be the cost price? So we know that according to this formula, if from here and from here, what we can say that if selling price is given, we have to calculate cost price. So cost price will be what? Selling price divided by 1 plus profit percent, if there is a profit. Or we can say that cost price is equals to selling price divided by 1 minus loss percent, if there is a loss, right? Yes, sir. Now we know in this question there is a profit of 10%. So how will calculate cost price? Like 165 divided by, as because this is a profit 10%, so this will become 1.1. Take this LCM 10 in numerator, and this becomes, this is how many times? We cancel out it 15 times, and the cost price becomes 150, right? Yes, sir. Very good. Let's do some more examples. Suppose if the question is based on cost price, mark price, discount, all. Let us say that the cost price is given 200, and it is mentioned that marked price is 25% above cost price, right? And we need to calculate mark price. Then in that case, can we write this as 200 into 1.25? Because this is also more, so we'll add 1 plus the 25%. If this is less, then we should have written 1 minus 25%, right? Yes, sir. Or you can write like 200 plus 25% of 200. Both you can write, right? So this will become 250. So the mark price becomes 250. Now if something discount is given on the mark price, and let us say that discount given is 20%, right? So discount, obviously the discount will be calculated on mark price. So now we can say that the discount value, we can write it like this, that 20% of 250, and 20% of 250 will become 50. So this is the discount. From here we can calculate the selling price, and the selling price will be the mark price minus discount value. How much discount is given? So this is 250 minus 200, that is equals to 200. So this is the one way to calculate cost price, selling price. The other way is same. We can calculate directly that selling price, as we know, this is based on the mark price. So mark price, which is 250 into, now here we will subtract 20% from 1. Why from 1? Because again we are comparing from mark price, and mark price itself is 100%.
So that's why this is 1 minus 20%, and we will get 250 into 0.8. Again we will solve and we'll get the value as 200. So we can calculate in both the ways, but if we have to find out whether this is in the whole transactions, whether shopkeeper get profit or loss, so we'll compare selling price and cost price, and we found that cost price is 200 as well as selling price is 200. So we can say that no profit, no loss, right? In the whole transaction there is neither a profit nor a loss. Is it clear? Yes, sir. Okay, now we'll do some examples as you earlier solved also. This one here, cost price is given 700, profit percentage is given 30%. We need to calculate the profit values as well as selling price. Now tell me what will be, at first tell me what will be the profit, because if we know what is the profit, then we'll add cost price and profit will get selling price, right? So first of all, tell me what will be the profit values. Sir, selling price is 910. Selling price is 910. very good, and profit, 210. yes, good. Now tell me what is in B, what is the cost price here and what is the profit. See here, selling price is given and there is a profit of 20%. So we can calculate cost price. Now using that formula, first we'll calculate the cost price. After that we'll subtract cost price from the selling price. We'll get the profit values. Sir, 1500 cost price. Good. And the profit is? 300. Now calculate this. See, D will be your homework. Sir, cost price 5000. Good. And the selling price? 5750. So now we look at the next questions. This question is visible? Yes, sir. Question says that a trader unknowingly calculated his profit percentage on the selling price and found it to be 20%. Find his actual profit percentage. What mistakes he did is that on the basis of with respect to calculating with respect to the cost price, by mistake he calculated with respect to selling price, right? So when we calculate with respect to cost price, we assume cost price here, as because by mistake calculated on selling price. So in this particular questions, you should assume selling price. Based on the selling price, you will get the profit. Now if you get the profit, you can calculate the cost price, and comparing that profit and cost price, again you will calculate the actual profit percent. See here, this 20% is with respect to what? This selling price, na? So Yes, I sir. told you that assume selling price. So now let the selling price be, let us say 100x, right? Yes, sir. In percentage, always assume with respect to 100 or 100 multiple. So let us say the selling price is 100. So profit will be how much? 20% of 100x, which is 20x, right? Yes, sir. Now if we know the profit, we know cost is selling price, so can we calculate cost price? This is how much? Selling price minus profit. This is the formula to calculate cost price if you know both selling price and profit. So the selling price is 100x, profit is 20x, and now we got this as 80x. Now we have to find out the actual profit percentage. As we know that the profit is 20x and the cost price is 80x, so we can find out the actual profit percentage, and that will be with respect to the CP. So profit, which is 20x,
with respect to cost price, which is 80x into 100. So this is cancel out in 4 times, and now this is in 25. So what you can say that the actual profit percentage is nothing but 25%. Are you getting it? Yes, sir. Next question देखें. Yes, sir. So here in this question it says that Sham sold an article at a profit of 30%, right? Had he sold it for rupees 100 less, he would have incurred a loss of 20%. Find the cost price of the article. Now the question says that Sham sold an article at a profit of 30%. So generally we calculate profit or loss with respect to cost price only. So we assume cost price. In the previous questions, it was mentioned that by mistake that shopkeeper calculated on selling price. That's why we assumed selling price. Else we would have assumed cost price only. So here we will assume cost price. So what it said that, let's say again the cost price be 100%, right? And that is 100x. So if we know cost price is 100x and there is a profit of 30%, right? Profit is 30%. What will be selling price? Let us say this selling price is selling price 1. If the cost price is 100x, profit is 30%, what will be selling price? 130x. Yes, 130x. Very good. Now it says that had he sold it for 100 less, that means what? The selling price is 100 less with respect to the previous selling price, right? So what we can Yes, say, sir. if condition is if the selling price 2 is 130x minus 100, right? Then क्या बोल रहा है? He would have incurred a loss of 20%. 20%. Now there will be a loss which is 20%, right? So now you know that loss is 20% and selling price 2 is this. So can we calculate cost price here? We know selling price, we know loss, so we can calculate cost price, right? And that will be how much? Selling price, which is 130x minus 100, right? By how much? 0 point. That will be na cost price, Yes, right? sir. Now you know that there is no change in the cost price, which means the cost price here and the cost price here that we assume, this both should be same. This should be same. There is no confusion, right? See, if you have confusion, ask me. सर ऐसा लिखा नहीं है कॉस्ट प्राइस में. Yes, that is why I am saying this. कहीं लिखा है कि cost price different है? No, sir. We are talking about the same article. Yes, sir. And why we are saying that this 20% less? Because the selling price, new selling price is basically 100 less with respect to the previous selling price, Yes, sir. right? And the previous selling price we got with respect to the cost price, this cost price. Yes, sir. So that's why here will be cost price will also be the same. Yes, sir. समझ रहे आप? अगर हमारे पास Yes, कॉस्ट sir. प्राइस चेंज कर देगा, बोल देगा क्वेश्चन में, देन हम डिफरेंट कॉस्ट प्राइस लेंगे. नहीं बोला है, दैट मींस व्हाट द कॉस्ट प्राइस इज सेम, Same. राइट? माइट हैव ऐसा कुछ लिख देता कि प्रीवियसली कॉस्ट प्राइस इज व्हाटएवर बी द कॉस्ट प्राइस एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 30%. नाउ इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज्ड बाय सम वैल्यू, देयर विल बी अ लॉस. तो इसका मतलब क्या है कि इन दैट केस सेलिंग प्राइस इज सेम, कॉस्ट प्राइस इज डिफरेंट, राइट? Yes, sir. बट हियर कॉस्ट प्राइस इज सेम, selling price is different because selling price को change किया है. So now the cost price previously we assumed that is 100x, and here this is 130x minus 100 by 0.8, both will be equal. So now take 0.8 this side, you will get 80x is equals to 130x minus 100. Now take 100 this side, you will get 50x is equals to how much? 100, 100. right? X is equals to 2.
or the cost price, that is 100x, that will be equals to 200, and this is the answer, right? Yes, sir. सो अगेन चेक कीजिए, कुछ और भी कंफ्यूजन है बताइए. No, sir. Okay. Now इसी Sir, क्वेश्चन, last यस यस यस, सर लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो फॉर्मूला से बनाया था SP माइनस CP बाई CP इंटू 100. तो उसका प्रॉफिट परसेंट 20% दिया हुआ था. तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होगा, तो 20% इज इक्वल्स टू SP माइनस CP बाय CP इंटू 100. तो CP को फिर 20% के साइड में लेके जाएंगे. ठीक है. यू आर सेइंग दैट this 20 is equals to SP minus CP by CP into, oh sorry, 100. this was calculated on SP. यस सर. Yes. SP. Yes. हाँ, यही गड़बड़ था SP. अच्छा, SP नहीं लिखा था तो क्योंकि वो इस तरह से कर सकते हैं. हाँ हाँ हाँ, ये बेसिकली प्रॉफिट है ही क्या एक्चुअली, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट. बट सपोज इफ प्रॉफिट इज डायरेक्टली गिवन, then do not write SP minus CP, directly write the profit. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. here in this question, what I'm saying that this question can be done, can be calculated in the single step. And what is that step? Let us say, suppose that here it says that in the first case there is a profit of 30%, right? So suppose the CP itself is what, 100%, right? Yes, sir. At first there is a profit of 30%. So with respect that, you can say that the selling price is 130. Yes, sir. Or 130%. And the second case there is a loss, and loss of how much? Again 20%. So here you can say that the selling price is how much? 80%. Yes, sir. Now if you compare the difference between these two, what you are getting? 50%. Right. That you can directly hear from here, that you can see that this is the 30, this is the 20. So the difference between these two will be 50%. Why? Because one is saying about the profit and the other is about loss. So both Yes, are sir. basically the two different side with respect to the cost price. If the profit we say that lie on the right side, so in that case the loss will lie on the left side. Yes, sir. So that's why the difference is not 30 minus 20. This is 30, that becomes 30 plus 20, right? But suppose Yes, अगर sir. इसमें बोलता है हमारे पास कि प्रॉफिट 30% है, और दूसरे केस में भी प्रॉफिट ही बोलता और 20%, तो फिर डिफरेंस क्या आता वहां पे? That is 10, because 10%. both lie on the same side. Yes, sir. So from here only you can say that there is a, in percentage there is a difference of 50%, and that 50% of what? CP, because profit or loss जो भी calculate हो रहा है, that is on CP. Yes, sir. तो 50% of CP, जो ये जो 50% ये आ रहा है, this is only because of this 100. ये 100 आप लेस कर रहे हैं प्रीवियस सेलिंग प्राइस में, तभी ये चीज हो रहा था, राइट? Yes, sir. तो आपको क्या मिल गया कि that 50% is rupees 100, which means that 100% will be just double of this 100, which is Yes, sir. 200. 200. And now this 200 is your answer, because आपको कॉस्ट प्राइस पूछा, and this 200 is the answer. Are you getting it? Yes, sir. कितने लाइन का है? एक लाइन में हो गया. Yes, only these two. ये हमने लिखा. और एक्चुअली अगर हम समझ गए थे इस प्रोसेस को, तो हमको लिखने का भी जरूरत नहीं है. 30 20 50, 50 में 100 है तो 100 में 200 होगा. Yes, sir. है ना? सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए, कंपेयर करे दो अलग अलग केस में, तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, इतना पूरा ये लिखने का जरूरत नहीं है ना? ठीक है. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट अ मर्चेंट bought two article and sold one of them at 30% profit and the other at 30% loss. Find his overall profit or loss percent.
if he had bought at the same price. That means what, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, same CP, and यहाँ पे क्या बोल रहा है, he had sold them at same price. That means what, same SP. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? Yes, sir. सबसे पहले समझते हैं कि when cost price is same CP. देखिए जब सीपी सेम है दैट मीन्स व्हाट कि जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा किसी भी आर्टिकल का, उन सबका बेस सेम रहेगा, राइट? बिकॉज सीपी क्या है, सेम। बेस में हमेशा क्या आता है, Yes. कॉस्ट प्राइस, राइट? सपोज अगर आपके पास बोल रहा है कि इफ टू आर्टिकल्स sold at X% profit and Y% loss, एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है कि ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस जो भी कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस एंड दैट कॉस्ट प्राइस इज सेम, सो जस्ट कॉस्ट, पहला एक्स क्या है, प्रॉफिट, शो वी राइट इट लाइक एक्स, दूसरा y% क्या है, लॉस, तो प्लस करेंगे, एंड एज बिकॉज y इज लॉस तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ y, बिकॉज प्रीवियसली परसेंटेज के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी चीज डिक्रीज हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं, और इंक्रीज के लिए प्लस लिखते हैं, राइट? Yes, sir. सो लाइक दिस यहाँ पे, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। वाई डिवाइडेड बाई 2? बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स, और यू कैन से द आर्टिकल, कितने आर्टिकल खरीदे और बेचे गए। अगर वो 2 थे तो 2, 3 होते तो 3, तो यहाँ पे डेफिनेटली नंबरेटर में 3 डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू आता, वेदर दैट इज इन प्रॉफिट और इन लॉस। आ रही बात समझ में? Yes, sir. सपोज अगर 3 आर्टिकल्स की बात करता है, एक्स वाई एंड जेड, कुछ भी परसेंटेज गिवन है, लेट अस से x% प्रॉफिट है, y%, दूसरा वाला y% प्रॉफिट पे है, बट तीसरा वाला z% लॉस पे। देन इन दैट केस क्या होगा, अगेन ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस, वो प्रॉफिट होगा कि लॉस डिपेंड करेगा यहाँ से साइन क्या आता है, अगर साइन नेगेटिव आया मतलब लॉस है, पॉजिटिव आया विच मीन्स प्रॉफिट है। Profit. यस, तो ओवरऑल जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आता है, that is again, as because x is in profit percentage, so plus x, y is also profit, so plus minus of z by 3। समझ रहे आप? Yes, sir. अभी सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे लिया कि आर्टिकल सोल्ड, सपोज एक 15% प्रॉफिट पे है और दूसरा 25% के लॉस पे बेचा गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, बता सकते हैं? Sir, 10% का लॉस, 5% का लॉस होगा. यस, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है, दिस इज 15 प्लस माइनस ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 2। Now we know this is minus of 10 by 2, which is minus of 5. So we will say that 5% loss in overall transaction, right? Yes, sir. Similarly, अगर आपको बोल रहा है यहाँ पे 15% का प्रॉफिट, 15% का लॉस, एंड अगेन 15% का प्रॉफिट है, 3 आर्टिकल पे, तो ओवरऑल क्या मिलेगा? 5% profit. यस, बेसिकली प्लस 15 लिखेंगे, फिर माइनस 15 हो जाएगा, फिर प्लस 15 होगा, एंड बिकॉज देर आर 3 आर्टिकल्स सो दिस इज डिवाइडेड बाई 3, ये 0 मिला, 15/3 दैट इज 5, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 5% का प्रॉफिट, राइट? Yes, sir. वेरी गुड। सो ये हमारे पास था, दैट इज बेस्ड ऑन द सेम सीपी, राइट?
अब इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, बट यहाँ पे सेम एसपी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इफ देयर इज सेम सेलिंग प्राइस, एंड ये स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चंस में, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, इस टाइप का ही क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल होगा। क्या होगा? सपोज इफ वन आइटम sold at X% profit and other at same X%, जो प्रीवियसली परसेंट था वही है, बट दिस टाइम लॉस। अगर ऐसा है तो ओवरऑल जो होगा आपको वो प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा, दैट विल ऑलवेज बी अ लॉस। एंड वो लॉस क्या होगा? दैट लॉस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100। इसका जितना वैल्यू आएगा उतना परसेंट आपका क्या होगा? लॉस होगा। क्वेश्चन स्पेसिफिक क्या है कि फर्स्ट की दो ही हमारे पास आर्टिकल है, एक अगर सपोज 10% प्रॉफिट पे बोलता है तो दूसरा क्या हो गया? 10% लॉस पे है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन एट 10% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस, तो क्या होगा? डेफिनेटली लॉस होगा, एंड दैट लॉस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नाउ हियर एक्स इज व्हाट? 10, so this is 10 square divided by 100, this much percent. Now 10 square is 100, 100 by 100 is 1, तो ओवरऑल आपको 1% का लॉस हो जाएगा डेफिनेटली। तो तभी ये एप्लीकेबल है जब मेरे पास प्रॉफिट भी हो रहा हो एक में लॉस भी हो रहा हो, बट परसेंटेज दोनों में सेम हो, तो हम ये अप्लाई कर देंगे। तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड 4 का बी दोनों का आंसर आ जाएगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन में 0 होगा। Yes, 30% loss, 30% profit, plus 30 minus 30, cancel out 0. Yes. और सेकंड क्वेश्चन में 9% लॉस। Yes, very good. The first is no profit, no loss, and the second is 9% loss. Good. Now suppose that if based on the same CP, sorry, same selling price, same SP, if the item sold at different profit percentage, whether that is a profit or loss, in that case questions कैसे बनेगा? ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के लिए, वो कॉन्सेप्ट इस पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है, बट एज बिकॉज इसके लिए इन शॉर्ट वन लाइन में आंसर आ जाता है, तो दैट्स व्हाई वो बिगर जो है वो हम नहीं यूज करते हम लोग, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है दैट इफ वन आइटम सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ठीक है, एंड another at 20%, it could be profit or loss, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20% लेट अस से लॉस। तो आपको कैलकुलेट करना है कि ओवरऑल वेदर ओवरऑल विल बी प्रॉफिट और लॉस, क्या होगा ये कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले जब भी आप सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज सेम, तो आपको सेलिंग प्राइस एज्यूम करना पड़ेगा, और आप जो एज्यूम करेंगे वही बोथ आर्टिकल्स के लिए वैलिड होगा। सो लेट द सेलिंग प्राइस बी, अब हम सेलिंग प्राइस यहाँ पे डायरेक्टली 100 एज्यूम नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज सपोज कुछ भी आप सेलिंग प्राइस एज्यूम करते हैं तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट, तो उसको आपको 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरा वाला आपको क्या बोल रहा है कि 20% लॉस, तो उसको 0.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे 1.1 होगा, यहाँ पे 0.8 होगा। अगर आप 100 ले लिए तो ना तो 100 1.1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ना ही 8 से डिविजिबल होगा, फ्रैक्शन दोनों जगह आएंगे। तो दैट्स व्हाई क्या कीजिए कि 11 और 8 इन दोनों के मल्टीपल में एक नंबर ले लीजिए आप। सो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, इंस्टेड ऑफ 100 हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट अस से 88x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। 100 क्यों नहीं कर रहे हैं? यस,
नाउ अब सीपी कैलकुलेट करते हैं बोथ के लिए. सो फर्स्ट सीपी is 88x divided by 1.1. Now 10 को यहाँ पे ले लो. 11 से 8 times में cancel out हो गया and this becomes 80x. Now similarly second CP, CP2, this will be how much? Again 88x. इस बार इसको डिवाइड करना है 0.8 से और ये हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 से डिवाइड करोगे 110x आएगा. यस सर. अब हमारे पास टोटल सीपी आ गया. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80x plus 110x, which is 190x, right? And total SP कितना होगा? That is 88x into 2, which is 176x. यस सर. तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपको टोटल 190 लगा और सेलिंग प्राइस क्या 170x 6 ही आया. तो दैट मीन्स व्हाट? डेफिनेटली लॉस हो गया. यस सर. Now that loss will be equals to how much? 196 में से 176 डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं, स्पेस कम है, दैट्स व्हाई. So this is how much? Can we say this is 14x यस सर. divided by 190x into 100. x कट गया, 0 कट गया, आपको क्या मिल गया? अब और कैंसिल आउट नहीं हो सकता. So this is 140 by 19%. This is what? Loss. अरे बात समझ में? अगर डिफरेंट होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस सर. वेरी गुड. सो अगर आप नोट डाउन करते जा रहे हैं तो अच्छा है, एल्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. आप बताइए, नोट डाउन करना है या कर लिए? सर थोड़ा बचा हुआ है. हाँ कर लीजिए. बताइए इसका आंसर क्या आएगा. राजेश bought 2 articles and sold one of them at 20% profit and the other at 40% loss. Find his overall profit or loss if he bought at the same price. That means what? Here CP is set. तो ये तो quite easy है. 20% profit, so this is 20 plus 40% loss minus 40. There is only 2 articles, so this is by 2. So what you will get is minus 20 by 2, which is minus of 10, which means 10% loss overall, right? यस सर. The selling price of 30 pence is equal to the cost price of 40 pence. Find the profit percentage, profit or loss percentage. First of all, tell me there will be profit or loss. Profit. If the selling price of 30 pence is equal to the cost price of 40 pence, so which means that given is what? That selling price of 30 pence, right? That is equals to CP of 40 pence. 40 pen. Now, if we assume CP of 1 pen, we'll get the CP of 40 as well as SP of 30. Let CP of 1 pen, that is equals to how much? Suppose this is X for example. Then CP of 40 pen will be 40x, right? Yes sir. Now, if this 40x will also be equal to SP of 30 pen. pence, yes, is equals to 40x, and for 1 pen, what we can say, this is 40x by 30, right? Yes sir. Or 4 by 3x. Now, you can see that the cost price of 1 pen is x and the selling price of 1 pen is 4 by 3x, which is more than 1 or more than x. So that means what? There is Yes a sir. profit. Yes sir. So now we will calculate profit percentage. So for that, the profit, which is 4 by 3x,
minus x divided by x into 100. Which we can say that this is 4x minus, if you take LCM, this will become 3x, and ये 3 जो हमारे पास है ये बाई में आ जाएगा यहाँ पे, and this is 3x into 100, right? And 4x Yes, sir. minus 3x is x by 3 into 100. Sorry, 3x, xx will get cancelled out, and this is 100 by 3, and that is 33.33%. Now this question can be solved in one line, and what is that? That whether there will be a profit or loss percent, that will again depend on the sign, whether it is a positive or negative. So how we'll do that for this type of questions, for this, right? That number of pen purchased minus number of pen sold by number of pen sold, and then this in whole bracket, for percentage we are multiplying it with 100, right? So according to this, जो हम कंपेयर कर रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ पेन परचेज, जो कितने पेन परचेज्ड है, किसे कंपेयर कर रहा है, देयर आर 40 पेन्स, राइट? सो दिस विल Yes, बी sir. 40, नाउ माइनस नंबर ऑफ पेन सोल्ड, तो जो कंपैरिजन में गिवन है हमारे पास वो वैल्यूज यहाँ पे लिखना है, दैट इज 30, सो 30. माइनस 30 बाय number of pens sold, so again that is 30, so by 30 into 100, and now this will become 10 by 30 into 100, and that is 1 by 3, which is 33.33%. Are you getting me? The solution is this much only Yes, sir. for this particular question. So now I hope clear hoga. So try question number 6b. We have mentioned that if the loss made by a trader in selling 30 kg of wheat is equal to the cost price of 6 kg of wheat, तो 30 kg आप सेल कर दिए और उसमें जो लॉस हुआ वो 6, जो हमारा 6 kg का वेट होगा, परचेजिंग प्राइस होगा, उतना उसको लॉस हुआ था, तो ओवरऑल उसको कितना लॉस परसेंट हो रहा? Sir, 20%. So now we have to find out that this B, that the loss made by a trader. So again, let the cost price of 1 kg wheat be X, right? Then in that case, cost price of 30 kg will be how much? 30x. Yes, sir, 30x. And cost price of 6 kg will be how much? 6x. Now the question says that if the loss made by a trader in selling 30 kg of wheat, 30 kg of wheat sell कर दिया वो, और तब उसको लॉस जो हो रहा है that is equal to the cost price of 6 kg of wheat. तो लॉस आपके पास दिया हुआ है कि लॉस इज गिवन, दैट लॉस इज हाउ मच, 6 kg ऑफ wheat का परचेजिंग कॉस्ट के इक्वल है, विच इज 6x. नाउ सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, किसका? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 kg, बिकॉज जो 6x जो हमारा लॉस हो रहा है ये 30 kg सेल करने पे हो रहा था, राइट? Yes, sir. तो क्या हो रहा है, लॉस हो गया ना, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? और बेसिकली सेलिंग प्राइस जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड लॉस. कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास, बस. सो लॉस परसेंट इज लॉस 6x बाय जो मेरा टोटल है, दिस इज 30x इंटू 100, 5 बार में कट गया, सो दिस इज 20%. क्या बोल रहा है, कॉसिक incurred a loss of 15% by selling 130 apples for ₹2210. मतलब यहाँ पे आपके पास जो 2210 गिवन है वो कितने एप्पल्स का है? 130 एप्पल्स का है, एंड दैट Yes, इज sir. सेलिंग प्राइस, राइट? Yes, sir. ठीक, तो आपके पास 130 एप्पल्स हैं,
उनका सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 2210, राइट, एंड ये बता दिया है कि देयर इज अ लॉस ऑफ हाउ मच 15%. Now can you Yes, tell sir. me what will be the cost price of these 130 apples? क्या करना चाहिए हम लोगों को? We know selling price, we know loss. Sir, 2600 cost price. डिवाइड कर लिया था आपने करेक्टली? हाँ. चलिए, सो 2600. तो इन दैट केस 1 एप्पल का सीपी निकाल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. क्या हो जाएगा? 20. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, देखिए टू गेन 20%. तो 20% क्या होगा? ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ईच एप्पल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा, ओवरऑल भी 20% का हो रहा है. तो पूछ रहे हैं कि Yes, sir. कितने नंबर ऑफ एप्पल्स आपको सेल करने पड़ेंगे इफ यू हैव टू गेट 9600. तो सबसे पहले तो देखिए कि ये आपका सीपी आ गया एंड बोल रहा है कि इफ प्रॉफिट इज 20%, तो प्रॉफिट अगर आपको 20% चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 1 एप्पल का? बताइए. वी नो कॉस्ट प्राइस इज 20 प्लस Yes, sir. 20% ऑफ 20, क्या हो जाएगा बताइए वैल्यू? 20% 4 हो जाएगा ना? 24. 24 हो Yes, गया sir. बस. तो आपको जो अमाउंट चाहिए, जो भी आपको अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट, वो क्या होगा? हमेशा Mhm. एक सेलिंग प्राइस, एक एप्पल का सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ एप्पल्स, यही होगा ना? Apples. Yes, sir. बस. तो अमाउंट आपको पता है 9600, ये भी आपको पता था 24, आप नंबर ऑफ एप्पल्स निकाल लिए. आधा से ज्यादा काम आप कर चुके थे. 24, this is 4 times. So the answer is 400 apple. We should sell 400 apples to get 20% profit and total amount 9600. आ रहा है? Yes, sir. बस ऐसे ही सेकंड वाला भी कर देना. वहां पे भी एक सेट का आपको सेलिंग प्राइस, एक सेट का कॉस्ट प्राइस निकाल के कंपेयर करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी होगा निकल जाएगा. Yes, sir. देखिए एक बार ट्राई कीजिए. सर यहाँ पे 7500 कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा? मोहन बाउट सम सेट कॉस्ट प्राइस. सर 10% प्रॉफिट. वेरी गुड, करेक्ट. So there is 10% profit.